Good morning to all the students of class 6. Most welcome to all of you in this video lecture. This is Karunesh Mishra, subject teacher of social study from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today we will study or we will revise the rest part of the history chapter 1, timeline. So we have completed till the chronology of events in these chapters. Today we will start timeline. So dear student, timeline is the graphical representation of historical events in a chronological order. In a chronological order, it looks like a long bar and is used to show events along a period of time. It has events on one side of it and their respective dates on the other sides. It is given in your book in figure 1.3, timeline of ancient Indian history. It is already given in your book, so you can see it. Okay, dear students, so is it clear to you that a timeline is a graphical representation of historical events in a chronological order? It looks like a long bar and is used to show events along the period of time. It has events on one side of it and their respective dates on other sides. Now we will study or we will revise the importance of geographical factors. So dear students, what is the importance of geographical factors to know the history? So dear students, since the time immemorial, India has been capturing the attentions of the outside world for its unique geographical features. भारत अपनी जो है विशेष भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक जो विशेषता के जो है कारण प्राचीन काल से ही जो है दूर जो है देशों को अपनी ओर आकर्षित करते रहा, ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट किया. So not surprisingly, people from foreign lands kept coming into India throughout our long history with their distinct socio-cultural identities. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अतीत काल से ही जो है लोग भारतवर्ष में यानी पाश्चात्य देश से लोग जो भारतवर्ष में पर्वत में स्थित खैबर बोलन आदि दरों से जो होकर जो है आए भारत में. So no surprisingly, people from foreign lands kept coming into India throughout long history with their distinct socio-cultural identities. The northern parts of the subcontinent is occupied by the Himalayas mountain range, which has acted as a natural barrier separating India from the Central Asia countries. भारत के उत्तर में यानी कि स्थित जो नवीन गलित पर्वत हिमालय पर्वत है, पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं, यह इसे जो है एशिया के जो है मध्य एशिया के जो देशों से जो अलग करता है. And at the same time, however, the passes in the mountains have served a natural gateway for the arrival of the peoples from outside. और पर्वत में स्थित जो दर्रे हैं जैसे खैबर बुलंद आदि का दर्रा है, यह विदेशी पर्यटकों को, विदेशी जो यात्रियों को भारत में आने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं. Facilities the intermingling and mergers of different ideas, people, tradition and culture. इससे जो है बहुत से जो है विचार, परंपराएं, संस्कृति या जो है भारतवर्ष में आई फूली. Another salient features of the Indian subcontinent is the vast fertile search of the Indo-Gangetic plains in the north. और भारत के उत्तर में जो उपजाऊ जो भूमि है, यह भी जो है बहुत बड़ी जो है भौगोलिक जो विशेषता है हमारे जो है देश भारतवर्ष की. बिलो द हिमालयस, हिमालय के नीचे जो है उत्तर में जो है फैले हुए दूर दूर तक जो उपजाऊ मैदान है. It was around this fertile plain that the first human settlement in these regions came into existence. और पहले जो मानव सभ्यता का प्रादुर्भाव जो है यहीं पर जो हुआ. The third major features of the subcontinent is the southern peninsula. और तीसरा जो प्रमुख जो है भौतिक जो विशेषता जो है भारत की जो है दक्षिण के जो पठारी प्रदेश, सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ बाय द विंध्या माउंटेन्स रेंज, जो कि इसे उत्तर में जो विंध्य रेंज से जो अलग करते हैं. दिस रीजन इज फुल ऑफ माउंटेन्स, रिवर, वैलीज एंड प्लेट्यूज. इस क्षेत्र में जो है पर्वत, नदियाँ, घाटी और जो है पठार जो है से भरे हुए क्षेत्र हैं.
During the long course of history, this region has evolved its own distinctive identity, leading a great diversity to the cultural configurations of the subcontinent. Dear students, in ancient times, people used two trade routes to travel across the region. प्राचीन समय में लोग दो तरह के जो मार्ग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रयोग करते थे. वन ऑफ दीज दैट लिंक द हिंदूकुश माउंटेन रेंज, हिंदूकुश जो है माउंटेन रेंज से जो होकर जो आते थे, टू माउथ ऑफ द रिवर गंगा वाज कॉल्ड द उत्तर पथ, से जो है गंगा तक जिसे उत्तर पथ कहा गया. एंड द अदर रूट विच कवर्ड द एरिया बिटवीन गुजरात इन द वेस्ट एंड पाटलिपुत्र इन द ईस्ट, और दूसरा जो मार्ग था गुजरात पश्चिम से जो है लेकर पाटलिपुत्र तक. सो वाज कॉल्ड द दक्षिण पथ, इसे जो है दक्षिण पथ कहा गया. सो उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ, देयर वर टू रूट्स across the regions. Two routes people used to trade or travel across the region, Uttar Path and Dakhin Path. Through these were primarily trade routes. People used them for other purposes as well. For instance, these routes were used by migrants, monarch and military leaders and spiritual leaders alike to achieve their respective ends. So geographical factors play a significant part in the way civilization flourished and declined. तो मानव सभ्यता का जो विकास हुआ, और जैसे बहुत सारी सभ्यताएं जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता वगैरह जो है डिक्लाइंड हो गई, यानी उनका जो पतन हो गया, लुप्त हो गए. तो इसमें भौगोलिक जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, भौगोलिक कारक जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करता है. So dear students, the Indus Valley civilizations about which we shall study later is noteworthy examples. Fertile plains on the banks of the river Indus and its tributaries served natural means for highly productive agriculture practices. Subsequently, surplus in agriculture produce led to the birth of urban centers. These paved the way for the emergence of different classes of craftspersons and traders. Now, dear students, we will study about the source of history. So, what are the sources of history with the help of which we can know about our past? So, dear students, we learn about the events that occurred thousands of years ago through the evidence which our ancestors have left behind. Historians and archaeologists came up with the path-breaking informations regarding the past. With the help of these evidence, the source materials studies by historians to get relevant informations can be divided into two categories: archaeological and literary. So, dear students, there are two sources of knowing the history of past. First one is the archaeological sources and second is the literary source. So what are the things that come under the archaeological source and what are the things that come under the literary source? Let's know about it. So dear students, here archaeological resources are inscriptions, monuments, coins, other objects and artifacts, and literary resources or sources of knowing history is religious and secular textbooks, indigenous and foreign sources, literary texts composed in unknown script. So dear students, archaeological sources are discovered and studied under a separate branch or discipline of historical रिसर्च कॉल्ड आर्कियोलॉजी. पुरातत्वविद जो होते हैं वो खुदाई करके जो है ऐतिहासिक तथ्यों को जो है का पता लगाते हैं. सो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट डिस्कवर्ड थ्रू द एक्सकेवेशंस कंडक्टिंग एट द वेरियस हिस्टोरिकल साइट्स. बहुत से ऐतिहासिक स्थलों पर खुदाई करके पुरातत्वविद जो है प्राप्त जो वस्तुएं हैं उसका साइंटिफिक जो स्टडी करते हैं. उसके आधार पर हमें जो है इतिहास को जानने में काफ़ी सुविधा प्राप्त होती है, काफ़ी
सहायता मिलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, monuments, coins, sculptures, painting, weapons, pottery, ornaments, and all other objects or artifacts under unearthed and artifacts unearthed through excavations at historical sites are various sources. These sources are often more reliable than the literary source because they reveal facts clearly and without any bias. Okay, so literary source includes a written form. These are important as they record the cultural, social, political, and economic state of affairs of the period during which they were composed. So, dear students, here we have studied about what are the things that comes under the archaeological source, which are very helpful for us to know the ancient history of Indian ancient history. So, dear students, monuments, coins, sculptures, paintings, weapons, pottery, ornaments, and all other objects or artifacts are the archaeological source which help us much more to give information about the ancient Indian history. Literary sources include a written form. These are important as they record the cultural, social, political, and economic state of affairs of the period during which they were composed. तो जो लिटरेरी सोर्स है यानी जो साहित्य है वो भी इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है। इसके अंतर्गत जो है लिखित जो पुस्तकें जो हैं यात्रा वृत्तांत जो है ये सब में प्राप्त होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉरेन ट्रेवलर के बारे में, वेनसांग के बारे में, फायान के बारे में, मेगास्थनीज के बारे में सुना होगा भी। मेगास्थनीज जो है यूनानी जो राजदूत थे। So, literary source includes a written form. These are important as they record the cultural, social, political, and economic state of affairs of the period during which they were composed. Different scripts such as Brahmi, Kharosthi, Devanagari, Aramaic, Roman, pictographic, etc. were used to compose this text. तो इन सारी जो है भाषाओं और लिपियों का प्रयोग किया गया। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया, देवनागरी का, पाली भाषा का। सो देयर वर मेनी लिटरेरी टेक्स्ट दैट वर नॉट रिटन एंड यूज्ड नो स्क्रिप्ट। बहुत सारे ऐसे भी लिटरेरी टेक्स्ट हैं जो उससे लिखे नहीं गए, यूज नो स्क्रिप्ट, बोली जो है नहीं मिलती है अभी। सो दे वी आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ओरली, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भाषा जो चलती आई। सो लेट अस नो और डिस्कस द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द ग्रेट डिटेल्स। अब हम इसको डिटेल्स में जो अध्ययन करेंगे हम लोग हियर। सो लेट्स स्टार्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द इंस्क्रिप्शंस व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ which inscriptions, monument and coins are the most important. So the first one is the inscriptions. I am going to explain you about the inscriptions and how it is helpful for us to give the knowledge or information about the ancient Indian history. So dear students, writing on a pillars, rocks, cave walls of forts, clay tablets, metal tablets, house and tops etc. are called the inscription. So writing on pillars, writing on stones, writing on wall, forts, clay tablets और known as the inscription, इसे जो है in Hindi it is called शिलालेख जो कहते हैं, are called inscriptions. These inscriptions provide political and social information of the past. ये जो शिलालेख हैं हमें जो अतीत की जो है राजनीतिक और जो है सामाजिक जो परिस्थितियों से जो अवगत कराते हैं। We learn the names of the kings and the religious and cultural practices of the people and so on. इससे हमें जो है उस काल के उस समय के जो है राजा का उस समय प्रचलित जो धर्म था इस सब का जो है ज्ञान हमें जो प्राप्त होता है। सो मॉन्यूमेंट्स, अब हम मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओल्ड बिल्डिंग्स सच एज फोर्ट्स, पैलेसेस, यानी कि पुरानी जो है जो बिल्डिंग्स जो भवन हैं जैसे कि किला हुआ, महल हुआ, मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ,
सीमेंटरीज हुआ, कब्रिस्तान वगैरह वो एटसेट्रा, विच वी आर बिल्ड फॉर सम स्पेशल पर्पज, जिसको विशेष उद्देश्य से बनाया जाता था, और कॉल्ड मोनूमेंट्स, इन्हें जो है मोनूमेंट्स कहा जाता है। द स्टडी ऑफ ओल्ड मोनूमेंट्स शो द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ दैट टाइम। जो ओल्ड मोनूमेंट्स हैं, पुराने जो भवन हैं वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ये हमें वहाँ की जो है शिल्प कला, स्थापत्य कला के बारे में जो है जानकारी प्रदान करते हैं। द सोशल लाइफ, देयर रिलीजियस बिलीव्स, ये वहाँ की जो है सामाजिक जो है जीवन, वहाँ के लोगों की जो धार्मिक मान्यताओं, सभ्यता और उनकी जो संस्कृति से हमें अवगत कराते हैं। द सांची स्तूप, सांची स्तूप जो है, द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय, द सूर्य टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम का जो है जो मंदिर है, आर सम एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट इंडियन मोनूमेंट्स, ये भारत के जो है प्राचीन जो है मोनूमेंट्स हैं। The descriptions of the building erected for a religious or civil purpose, such as the temple, stupas, places, and private houses, point to the conditions of prevailing in ancient times. Monuments of the identical character excavated in India and abroad establish a link between the various areas of love, suggesting that peoples from ancient India reached foreign lands. The temple of Angkor Wat in Cambodia is an outstanding example of Brahminical and Buddhist and Jain monuments. Help us to know the history of different religious systems in ancient time. Okay, dear students. Now, importance time. Dear students,